Hey guys, my name is Rahul and welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to discuss about number patterns. So before starting, guys, अगर आप उन बच्चों में से हो जिन्हें हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक दिखाई देता है, but you never understand those all logic because of wrong guidance और मे बी आपको टीचर अच्छा ना मिला, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है एंड यू विल नेवर टच दोज ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि अगर मैं टच करूंगा तो यू विल नॉट गेट द प्रॉपर गाइडेंस. आई विल हेल्प यू इन getting the visibility of all those logic behind. It could be pattern or Java code or any other type of languages. So guys, stay with me and watch this video till the end. If you find this video helpful, then hit on the like button, subscribe to this channel and also share this video with your friends. अकेले मजे मत लेना भाई. One more thing guys, if you have not followed us on Instagram, then the link I have added in the description box panel and also the channel name is visible over here. So go and follow us today. So let's get started. गाइज इस वीडियो में ये चार पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं. विल अंडरस्टैंड प्रीरिक्विजिट क्या है, हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि यार इसका कोड कैसे करना है. कोई भी चीज करने से पहले डेफिनेटली आपकी एक प्लानिंग होती है, तो वो प्लानिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो प्लानिंग कैसे करना है एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द कोड. गाइज दिस इज फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस. अगर आपको कहीं भी पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस मिलता है ना, तो यू शुड ऑलवेज क्रिएट अ टेबल. टेबल क्रिएट करने के बाद यू स्टार्ट फिलिंग ऑल द वैल्यूज इनसाइड इट और सेग्रीगेट करो रोज एंड कॉलम्स में. तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखो तो दिस ऑल आर रोज एंड ये सारे क्या है, कॉलम्स है. मतलब वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं. तो अपने को ये पता चल गया कि हमें दो फोर लूप लेनी है, राइट. एक तो होगा अपने टू एग्जीक्यूट ऑल द रोज एंड सेकेंड वाला अपना होगा टू एग्जीक्यूट ऑल द कॉलम्स. चलो ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया कि दो फोर लूप लेनी है. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अगर आप ये कोड ये टेबल अगर आप देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पे आई जो रोज है ना, रोज में सारे वैल्यूज सेम है. वी हैव ऑल द वैल्यूज सेम इन अ रो बट दिस ऑल आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. देखो फर्स्ट में हमारे पास 1 है, सेकेंड रो में हमारे पास 2 है, देन 3 है, देन 4 है. सो गाइज आई थिंक वी हैव इनफ information to execute the code. So let's go to Eclipse and start writing the code. So here we have a code. So I have taken 2 for loop here. First one is to execute all the row loop and second one is to execute all the column values. Common यहाँ पे क्या है, common अपना I है, right? मतलब rows अपने पास सारे common है. यहाँ देखो first row में अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. It means जो भी values आपके पास common होती हैं इस केस में, तो आपने वही वाला value print कर देंगे. तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, system.out.print and you will have to put I. So once you have this, you just have to run the code and you will get your output printed. Now let's understand the logic. So guys, अगर आप यहाँ पे देखो तो I का जो वैल्यू हमारे पास, this is 1. Now it will check is 1 less than equals to 4. This is true. अगर ये सही है तो it will get inside the inner for loop and it will try to check the another value. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो what is the things we have? We have j equals to 1 here. Now it will check is 1 is less than equals to 4. This is true. If this is true, it will print 1 I. So what is the value of I we have? I value is 1. So it will print 1 over here. Again the cursor will be here. Again it will go, it will check is 2 is less than equals to 4. Again this is true. If this is true, again it will print what? I. And what is the value of I we have? 1. Again it will print one more 1 over here. Again it will go and check is 3 less than equals to 4. This is again true. If this is true, again it will print one more I. And what is the value of I we have? I value is 1. Again it will print one more 1. Like this, it will print all the 1 in the first row. Again it will go and it will check for the another row and it will print all the second values over here. So guys, this is the logic behind this and I would recommend कि आप practice करो and you will definitely understand कि कैसे हम इसे execute कर सकते हैं. Now the second thing is, अभी आप यहाँ पे अगर देखो तो we don't have any spaces in between the 1 and 2, right? In order to print space, आप क्या करो? You just have to put concatenation and you just have to pass the double quotes and inside it you just have to put one space. Save it and just run your code. You will get spaces printed in between the numbers. Hope you understood how to print this pattern in Java language. So guys, let's try to understand how we can print this type of pattern in Java. तो गाइज अगर आप देखो तो दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे पास. यहाँ पे फर्स्ट वाले रो में अपने पास 1 1 1 बट सेकेंड वाले में क्या है हमारे पास 4 है, देन 3 है, देन 2 है, देन 1 है. तो गाइज अगर दोनों में आप डिफरेंस देखते हो तो वैल्यूज सारे सेम है बट जो सेकेंड वाला है ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. देखो
4, then 3, then 2, then 1। तो अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें, इस वाले में क्या था, अपने को हमने 1 प्रिंट करवाया था, राइट। बट यहाँ पे अपने को क्या प्रिंट कराना है, फर्स्ट वाले रो में अपने को प्रिंट कराना है 4 वैल्यू। तो इन दैट केस यू विल हैव टू स्टार्ट दिस फ्रॉम द 4 एंड आई विल जस्ट से इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 and this should be I minus minus. Now अगर आप कोड को देखो तो what is the value of I we have? 4. Is 4 greater than equals to 1? Yeah, this is true. If this is true, it will get inside the inner loop and it will start executing all the values. And अपने को print क्या करना है? You will have to print I. So guys, it will go and check. J का value क्या है हमारे पास? J equals to 1. It will check. Is 1 is less than equals to 4? True. तो ये print क्या करेगा? It will print I value. And I का value हमारे पास क्या है? 4. So it will print 4 over here. Again it will go, it will check. Is 2 is less than equals to 4? This is again true. It will again print 4. So guys, आपका जो pattern होगा, you will get 4 4 4, 3 3 3, 2 2 2 and 1 1 1 like this pattern. So guys, अगर हम prerequisite की बात करें तो सब में common ही है, हमें दो for loop लेनी है. One is for I, that is for row loop, and second one is for J, that is for column loop. अगर second वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये और इसमें अगर हम difference देखते हैं तो what is the difference we have? इस केस में अगर आप देखो तो we have all the columns value same. देखो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, सेकंड कॉलम में 2 2 2, थर्ड कॉलम में 3 3 3 एंड फोर्थ कॉलम में 4 4 4. We can say here we have all the values same in a column but in the increasing order, क्योंकि ये increase हो रहा है, राइट। फर्स्ट कॉलम में 1 है, सेकंड कॉलम में 2 है, देन 3 है, देन 4 है। यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास? J वैल्यू, कॉलम वैल्यू। So instead of printing that, you just have to pass what? You just have to pass J over here. And guys, हम start करने वाले 1 से, so you just have to start this with I equals to 1. Then you just have to say I should be less than equals to 4 and this should be I plus plus. Now if you just run your code, then definitely you will get your same output printed in your command prompt or console section. Guys, अगर आप यहाँ पे I equals to 4 भी करोगे ना, तो you will get the same output. Let me show you. अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस वाला ही अगर मैं कंसीडर करूं एंड इफ आई जस्ट से माइनस माइनस एंड इफ आई जस्ट ट्राई टू रन माय कोड, अगेन यू विल गेट द सेम आउटपुट प्रिंटेड. सो गाइस, दिस ऑल आर द थिंग्स जो आपको अंडरस्टैंड करना होगा. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि यार क्या ये चीज ऐसे हो सकता है. इट्स नॉट लाइक कि जो आपको किसी ने बता दिया यू स्टिक टू दोज थिंग्स एंड यू स्टार्ट कॉपी एंड पेस्टिंग द थिंग्स. नहीं, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. और वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करते हो, ढेर सारा प्रैक्टिस करते हो, देन यू विल गेट दोज ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर. नाउ अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं तो गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाले में 4 है, सेकंड वाले में 3 है, देन 2 है, देन 1 है. ये चलो आप जो भी फिक्स कर दो, बट अगेन हमें चेंज क्या करना है, J का वैल्यू. तो J यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट दिस फ्रॉम 4 एंड यहाँ पे हमने क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड इंस्टेड ऑफ J प्लस प्लस अपने को डिक्रीमेंट करना है. Now just run your code and you will get the same output. 4 4 4, 3 3 3, 2 2 2 and 1 1. So guys, this is how we can print this all pattern. Any doubt related to this pattern or the previous videos, please आप comment section में आओ, comment section में अपने questions को post करो and you can also drop us an email at codespark567@gmail.com. Get your doubts cleared and any help if you need, just let me know. Thank you for watching, guys. If you like this video, please hit on the like button, subscribe to the channel and also press the bell icon. Thank you for your time. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.